presentation. Okay. 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 तो आज का बेटा जो टॉपिक है, जो मैंने आपसे बताया था, जो एक ही टॉपिक आज हमने लिया है, एंड विल मेक इट वेरी इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग सो दैट आप लोग उसको समझ सकें. तो जो मेन टॉपिक है, दैट इज द ह्यूमन गोल ऑफ लाइफ. सो दिस इज लाइक यू रिमेंबर द लास्ट टाइम वी डिड हिंदुइज्म बेसिक्स. हम लोगों ने हिंदुइज्म 101 किया था. हम लोग ने ओरिजिन की बात की थी, हिंदू वर्ल्ड कहाँ से आया हमने उसकी बात की थी. We talked about the Sanatan Dharma, right? You remember? I mean, the people who have joined our class, you might know what we talked about, right? And now we are going to a more, uh, uh, we are delving a layer below, just scratching the surface, and we are going to talk about the human goals of life. So Hinduism में, our Vedas, they gave us a set of instructions, not as an instructions to follow, but as an instruction कि human life का goal क्या होना चाहिए, right? जैसे कि एक बहुत ही philosophical question आता है बेटे कि okay, now what am I supposed to do, right? So there are different dimensions to that question, and we will going to talk about it. But before that, what we are going to do is we are going to talk about the image which you are seeing in your screen. कोई मुझे बताएगा इस इमेज को क्या बोलते हैं? ये सिंबल को क्या बोलते हैं बेटा हिंदुइज्म में, बताइए. हाँ बेटा, इसको कहते हैं स्वास्तिका. स्वास्तिका, यस राइट. और बेटा ये जो स्वास्तिका है, ये बेटा हमारे हिंदू रिलीजन का ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट और सीक्रेट सिंबल है. एंड ये सिंबल का मीनिंग क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा. इसका जो स्वास्तिका जो वर्ड है, ये संस्कृत में दो वर्डों से बना है, विच इज सु प्लस आस्ति. सु जो वर्ड है वो शुभ का स्मॉल वर्ड है. शु मीन्स वेल बीइंग, आस्ति मीन्स टू हैव इट. ओके, सो स्वास्तिका का मतलब जो होता है वो ये होता है कि इट मीन्स दैट अ गुड फॉर्च्यून, द ऑस्पिशियसनेस ऑफ द इवेंट, well-being, hopeful, and being creative, and being all the good things. It represents all the good things. स्वास्तिका. तो हिंदू हमारे उसमें रिलीजन में, यहाँ तक कि दूसरे भी रिलीजन में, मैं उसकी बाद में बात करूंगा, लेकिन हमारे मेनली जो हमारा ये जो सिंबल है, ये डिनोट करता है कि जब भी हम कोई काम करने जाते हैं वो शुभ हो, वो अच्छा हो, उसके परिणाम अच्छे निकले, उसके ऑब्जेक्टिव अच्छे हों. ओके बेटा, तो ये सब हमारे जो वो है, ये स्वास्तिका से हम वो करते हैं. ओके. अब ये बेटा आप इसमें जो 4 ये देख रहे हैं ना, देयर आर 4 chambers, so to speak. Okay, these 4 chambers, what do they represent? Okay, these 4 chambers which you are looking over here, they represent 4, they can represent many things, because in Hinduism we have many things which are 4, which are, अब हमारा जो 4 लेटर जो होता है, 4 नंबर जो होता है, वो बहुत ऑस्पिशियस भी माना जाता है. और ये जो 4 हैं, ये ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद और अर्थवेद. ये हम लोग ने पिछली बार बात किया था, अगर आप लोगों को याद होगा बेटा. ये हम लोग ने वेद की बात की थी, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उसकी बात की थी. तो ये जो 4 प्रोमिनेंट स्क्रिप्चर्स हैं, ये उसको भी डोनेट करता है. ये 4 डायरेक्शंस को भी डोनेट करता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. तो वो 4 डायरेक्शन हो गए. 4 सीजन्स हो गए, या 4 युग हो गए हमारे हिंदुइज्म में, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और काली युग. ठीक. तो ये जो 4 इसके जो चैम्बर्स हैं, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है. और बेटा ये बुद्धिज्म में और जैनिज्म में, इन दोनों रिलीजन में, जो कि दोनों हिंदुइज्म से निकले हैं, ये दोनों में भी ये जो सिंबल है, ये बहुत सीक्रेट सिंबल माना गया है. जैनिज्म में इसको बोला गया है कि ये तीर्थंकर जो वहां पे जैनिज्म में हमारे होते हैं, ये उनका सिंबल है. और बुद्धिज्म में इसको खुद भगवान बुद्ध का पैरों के वो माने गए हैं, उनके फुटप्रिंट्स माने गए हैं. ओके. और आपको मालूम है कि हिंदुइज्म में हम भगवान बुद्ध को विष्णु का भी अवतार मानते हैं. तो ये जो सारी चीजें पूरी जुड़ी हुई हैं, ये कड़ी जो है ये पूरी जुड़ी हुई है. हम लोग ने पिछली बार, आपको याद होगा, वी टॉक्ड अबाउट ओम, द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिंबल ओम. ओम और स्वास्तिका, ये दोनों हिंदुइज्म के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. ओके बेटा. नाउ हैविंग सेड दैट, एक यहाँ पे छोटा सा मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ.
that this symbol, swastika symbol, was very misutilized, was by Hitler in the Second World War. In the Second World War, में Hitler has uh, put a different meaning to this swastika symbol. He has used the symbol. He has put a black color on it, diagonal it, and he used this symbol as a symbol of Nazi movement in during the World War II. And that is why many people in Europe, they do not understand that actually what Hitler has done, he has stole our symbol, our sacred symbol, and he concatenated a story. उसने एक story बनाया है about the great noble race of Aryans, and he said that all the Germans came from that race. It is totally wrong. The historians now prove that it is a concocted story. Okay. मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि you should also know that tomorrow somebody might tell you that swastika symbol is not the right symbol. You should have the right answer. Hitler has stolen this. Okay. So that is, now everybody realize it now that we are like 50-60 years down the line. Now we know it. Okay. Okay, let's move forward then. Is there any question? Okay. Okay, so I'll move forward. Okay. अब बेटा ये आप जो अपनी स्क्रीन में देख रहे हो, दिस इज द गायत्री मंत्र. ओके, ये हमारे हिंदुज्म का, पिछली बार आपको याद है ना, हम लोग ने वाला मंत्र किया था, भगवान गणेश जी का मंत्र से हम लोग ने अपना वो स्टार्ट किया था, सेशन स्टार्ट किया था. ओके, दिस टाइम आई हैव चोजन द मोस्ट प्रोमिनेंट mantra of Hindu religion, which is the Gayatri Mantra. So the Gayatri Mantra, it's coming from none other than the Rig Veda, the most oldest scripture on earth. Okay, and the Gayatri Mantra, before even I start talking about it, the Gayatri Mantra, let me tell you some facts about the mantra. Okay, so Gayatri Mantra is the, as I said, is the oldest and the most powerful of the Sanskrit mantra. Okay, and we call it Gayatri Mantra because we address this mantra to to goddess Gayatri. So she is known as the Ved Mata. Okay, because she is known as the mother of all the Vedas. It is said that Gayatri Mata has given the Vedas to Brahma. Okay, and all the Vedas, Rig Ved, Arth Ved, Yajur Ved, Sam Ved, इन सब की वो माता कहलाती हैं. ठीक है बेटे, तो इसको हम इसलिए हम इसको गायत्री मंत्र बोलते हैं. अच्छा, एक बात इसमें और भी है, गायत्री जो वर्ड है वो दो चीजों से बना है, गया और त्रि. जो गया वर्ड है उसका मतलब होता है नॉलेज, विजडम. ओके, एंड त्रि मींस थ्री. तो जो गायत्री माता की बात हो रही है वो एक्चुअली शी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द थ्री देवीज. शी इज द कॉम्बिनेशन, द डिवाइन एसेंस ऑफ महालक्ष्मी, महासरस्वती एंड महाकाली. ओके, उन तीनों के कॉम्बिनेशन में भी हम गायत्री माता की पूजा करते हैं. अब हम ये मंत्र को देखेंगे और मैं इसका आपको मीनिंग बताऊंगा. ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है. आप लोग इसको डू दिस मंत्र विथ फेथ and close your eyes and you can just first listen to me and then we will do it together. We'll chant it together. Okay. Okay. Om bhuvah swah tasya viturvarenyam bhargav devasya dhimahi dhiyo yo nah prachodayat. Okay. पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा मीनिंग बताता हूँ. भू का मतलब होता है भूमि, मीन्स जमीन, मीन्स अर्थ. अर्थ को हम लोग भू बोल रहे हैं. भुरवा, भुआ जो एक नेक्स्ट डायमेंशन है, द लाइक आवर मैटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड भू, मींस भूमि. भुआ जो होता है वो स्वर्ग और भूमि के बीच का लोक है, विच इज द थर्ड डायमेंशन. आप इसको डायमेंशन बोल सकते हो, लोक बोल सकते हो, उसको हम बोलते हैं भुआ. ओके, भुआ एक डायमेंशन है. और स्वाह मींस स्वर्ग. हे और ओम, हर मंत्र की जैसे शुरुआत, ज्यादातर मंत्रों की शुरुआत ओम से होती है. ओम भू भुआ स्वाह मींस इन तीनों लोकों को ब्राइट करने वाले भगवान की बात हो रही है. ओ द ऑब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, द क्रिएटर ऑफ द थ्री डायमेंशंस, वी मेडिटेट अपॉन योर डिवाइन लाइट.
May you stimulate our intellect and bestow upon us the true knowledge. Okay, so this particular mantra is also some कुछ लोग ये भी कहते हैं कि this is a Lord Sun's mantra, जहाँ पे हम सन भगवान की ही पूजा करते हैं और उनसे बोलते हैं कि ओ Almighty God, give us all the your divine light so that our intellect and our wisdom is stimulated, right? अच्छा, अभी आप लोग एक बार ये वाला जो हेलो, what is the mantra? yes, so we will do the mantra. I will speak the mantra and I will request all of you, आप लोग अपना अनम्यूट कर लीजिए और आप लोग ये मंत्र मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? ओके। No uncle, I'm asking what is a mantra? ओके बेटा, मंत्र एक आप ऐसे समझ लो, इट्स लाइक अ सेक्रेड वर्ड विच इज ये एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आप जब बोलते हो तो इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी विच गेट्स क्रिएटेड ऑल अराउंड यू। तो कोई भी मंत्र जो होता है, जो हम लोग चाहे उसको कई बार दोहराते हैं, 108 बार नॉर्मली हिंदुइज्म में हम लोग जब पूरी माला को वो करते हैं, तो मंत्र का मतलब ये होता है वो वर्ड्स जो आपके एनर्जी के जो लेवल्स होते हैं उसको चेंज करते हैं। अगर आप मंत्र बार बार बोलते चले जाते हो तो आपके अंदर और आपके बाहर के जो उसको बोलते हैं ऑरा जो होता है वो उसको अफेक्ट करता है। एंड मंत्र डायरेक्टली चेंजेस द वे द पीपल रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन एंड द सिचुएशंस रिस्पॉन्ड टू पीपल। तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, शायद आप उस समय नहीं थे वेदांत, मैंने आपको शायद बताया था कि मंत्र हमने खुद देखा है कि जब ओम वर्ड एक्चुअली चेंजेस द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर, या जब हमने इस पर भी जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, गायत्री मंत्र पे भी जब उन्होंने रिसर्च किया, तो दे हैव सीन दैट बाय चैंटिंग द गायत्री मंत्र मल्टीपल टाइम्स, मे बी 1 or 2 hours, योर माइंड, आपका जो माइंड से उन्होंने जो मैपिंग किया था वो बदलने लगा है। द माइंड इटसेल्फ चेंजेस, इट बिकम्स मोर ब्राइटर, मोर उसका जो पेरीमीटर है वो बदलने लगा है। ओके बेटा, ओके। तो एक बार हम सब लोग इसको बोलेंगे, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को एंड वी विल जस्ट गो थ्रू इट वंस। ये मंत्र बोलेंगे, आपको मंत्र बोलना है। ओके बेटा, ओके। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गौ देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुड, वेरी गुड बेटा। अब आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा बाद में, और आप लोग चाहें तो इस पे आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं। ओके, एनीवेज विल कम अबाउट इट लेटर। ओके बेटा, लेट्स प्रोसीड नाउ। ओके, आप लोग अपना म्यूट कर लीजिए। ओके ओके, चलिए अब जल्दी से हम लोग एक क्विज कर लेते हैं। ये जो क्विज है दैट इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट लेसन व्हिच वी डिड द लास्ट संडे। तो आज हम लोग देखेंगे किसको कितना याद है। ओके, सो स्टार्ट फॉर द क्विज। हम ऐसा करते हैं कि जो पहले, एक मिनट, लेट मी सी, दो पहले हैंड नहीं रेज करेंगे, जो पहले बोलेंगे मैं उसको बोलूंगा कि आप आंसर दे दो। ओके, सो अनम्यूट योरसेल्फ एंड विल गेट स्टार्टेड विद दिस। ओके, आप लोग को बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो पहले बोलना जिसको बोलना है। हिंदुइज्म इज डैश लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। Yes. क्या आंसर दिया? First. थर्ड, यस, आंसर इज द थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। हमने पिछली बार इसको कवर किया था। द फर्स्ट इज द क्रिश्चियनिटी, सेकंड इज इस्लाम एंड द थर्ड इज हिंदुइज्म। So Hinduism is the third largest religion in the world. Okay. Second, 95% of Hindus live in which country? India and Nepal. India. Yes, good. India plus Nepal को भी अगर हम जोड़ देंगे तो बेटा 98% तक हो जाता है।
लेकिन 95% ऑफ हिंदू ओनली लिव इन इंडिया. सो इंडिया इज द ओनली कंट्री in the world which is Hindu majority, and almost all the Hindus, like 95% from almost all बोल सकते हैं, live in India. Okay. Okay. Which is the oldest religion of the world? Hinduism. Yes. हम लोग ओल्डेस्ट रिलीजन, एक्चुअली हम लोग तो तब से हैं बेटा जब ये वर्ल्ड ही नहीं था, रिलीजन कोई जानता ही नहीं था रिलीजन होता क्या है, तब भी एक ही रिलीजन था, वही है सनातन धर्म. ओके. एनीवे, which is the first recorded settlement of Hindu population? Sindhu. Okay. नहीं, सिंधु बेटा वो रिवर का नाम है. ओके. आप बताइए, ये एक रिकॉर्डेड सेटलमेंट की हम लोग ने बात की थी ना पहले, आपको याद है? ओके. ओके, सो द आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. ओके. जो इंडस वैली जो सिंधु रिवर जो आप लोग ने बोला था बेटा, उसी के पूरे इर्द गिर्द पूरी जो सिविलाइजेशन थी उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. वही हिंदू की पहली रिकॉर्डेड सेटलमेंट है. इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वही पहली सेटलमेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हमको मिली और ये रिकॉर्डेड है, ये ऑन पेपर है. ओके. ये इट इज ऑलमोस्ट लाइक 5000 ईयर्स ओल्ड की बात कर रहे हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में. हमने पिछली बार पढ़ाया था, आप लोग एक बार रेफर कर लेना जो लोग की पहली क्लास है. The name Hindu is derived from which river? Tell me. Indus. Indus is the right answer. Indus को वैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन वैसे क्योंकि हिंदू नाम है इसलिए सिंधु हम इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु नदी. हाँ, हमने आपको बताया था ना कि जो लोग पारसी और सॉरी नॉट पारसी, जो लोग अरब से और ईरान से, जो आज का ईरान है, वहां से जो लोगों ने हम पर अटैक किया था, वो लोग एस को एच प्रोनाउंस करते थे, तो इसलिए वो लोग हिंदू बोलने लगे. राइट. ओके. द एक्चुअल वर्ड फॉर द हिंदू रिलीजन इज Sanatan Dharma. सनातन धर्म. यस, वेरी गुड. दैट्स द एक्चुअल वर्ड. ये हिंदू हमको दूसरे बुलाने लगे, हम अपने आप को कभी हिंदू से रिप्रेजेंट. Okay, sorry, I think there was some problem. Okay, so let's proceed then. We have completed 6. Yeah. So the second question is, two broad categorization of the Hindu scriptures are dash and dash. Okay, so the answer for this question is are Smriti and Shruti. If you do remember, I have talked about it in the previous class, where we have like all the Vedas, all the Upanishad, the Puranas, the Itihas, all of those are categorized by the tradition of hearing that from the Guru and memorizing it. Okay, so all the scriptures are divided as Smriti and Shruti. You can refer to my earlier class. Okay. The next question is, fifth avatar of Lord Vishnu is known as Vaman. The answer is Vaman avatar. We have also discussed the story of Lord Vishnu fifth avatar in our previous class. So if you want, you can refer back to that particular part. I think it was part 2 or maybe part 3. Yeah. So you can refer it to that. Okay, now the next question. Which three world religions branched out of Hinduism? Okay, so the answer, let me give it to you. So the answer is one is Buddhism, second Jainism, and third Sikhism. So Buddhism के जो like the person who started Buddhism is Gautam Buddha. And for Jainism, it is the 24th Tirthankara of Jainism, Lord Mahavira. And for Sikhism, it is Guru Nanak. Okay, so all these enlightened people, they started their own. They made some modifications in the way the particular religions are to be followed, and they started their own religion. Okay. Okay. So the earliest recorded manuscript is known to mankind is. The answer is the Rig Veda.
The Rig Veda, those are dated back to something like 7,000 to 10,000 years back, and those are the earliest recorded manuscript which we have, seen as a proof to the mankind till date. Okay, good. So now that we have completed all the quiz, now let's go to our main topic of the day. And the main topic which I wanted to teach you is about the perennial question is about what is the goal of the human existence. सो वेद में बेटे, वेद में ये बहुत अच्छे से समझाया गया है इसके बारे में कि एक जो कॉमन मैन की, एक ले मैन बोले या कॉमन मैन बोले, एक सामान्य आम आदमी की जिंदगी में वेद के अनुसार उसका गोल क्या होना चाहिए। तो इसमें हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। पहला मैस्लो हायरार्ची ऑफ नीड्स, जो कि अब्राहम मैस्लो ने दिया था बैक इन 1920s 1930s, and he talked about the physiological needs, the psychological needs, the self-fulfillment needs, which we'll talk about, and then how do our Vedas, which have given those goals for human life something like 6,000 to 10,000 years back. Okay. इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें पुरुषार्थ कर का एक वर्ड आया है। पुरुषार्थ दो चीजों से बना है, पुरुष और अर्थ। मीन्स पुरुष means like as in human being, and earth means ka, what is the meaning. So what it encapsulates is what is the meaning for being born as human being, which means that what is the objective or the goal of the human life. Okay, now let's quickly talk about first Maslow's hierarchy of needs. What you are looking at your screen is Maslow's hierarchy of needs, and it is divided into three broad categories, like the basic need, the psychological need, and the self-fulfillment need. Okay, which is further categorized two needs as the physiological need and the safety needs as the basic need. Now let me take maybe a minute to explain this to you. Consider a life where you have to struggle on a daily basis for the food, for the water, for your clothes, for your safety, for your house. जैसे कि हम लोग इंडिया में भी बोलते हैं, भारत में भी बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, वो तीनों बेसिक नीड्स। आदमी के पास अगर रोटी कपड़ा और मकान नहीं होगा तो फिर वो बाकी बड़ी जो उपलब्धियां होती हैं जिंदगी में, जो बड़े नीड्स होते हैं, यहाँ तक कि जो वो ध्यान लगाए या जो भी भगवान की तरफ अगर वो जाना भी चाहे तो पहले एटलीस्ट उसका पेट भरा होना चाहिए। खाली पेट से तो पूजा भी नहीं होती, राइट, कहते हैं ना। ओके, तो उसी के चलते ये जो बेसिक नीड्स हैं, आपको खाने पीने की, रेस्ट की, और आपके घर होने के, आपके ऊपर छत होने का, और सेफ्टी का। सेफ्टी का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप रात में सो रहे हो तो आप सेफ हो, कोई आपके घर में आके कोई डाकू या कोई चोर नहीं आ रहा है, या आप जानते हो कि कोई अर्थक्वेक नहीं आने वाला है, एटलीस्ट आपकी वो कॉन्शियस माइंड में नहीं है, वो एक डर नहीं आपके अंदर समाया हुआ है। So those are the physiological needs and the safety need, which every human need as their basic need to be satisfied for them to concentrate their mind for the higher need and to do the higher work. Okay. उसके बाद जो नीड होती है ह्यूमन की, जो ह्यूमन को मोटिवेट करता है, that is belongingness and love needs. Say for example, once this need is completed, then you want to have good friends, you want to have people whom you can trust, people whom you can talk, you can share your feelings, your parents, your brothers, your sisters, like all the society relationships, whichever you make, whether it's a husband, wife, a lover, or whatever, right? So that need plus the need to feel important, that is very important, which is known as esteem needs. Say for example, even if you have a good relation, but if you are not felt as if you are adding any value to that relationship, or if you are not feeling as if you are being valued in that relationship, that would also put you down. Okay, so एक तो आपकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं वो ये होती हैं, एंड सेकेंड दैट यू शुड हैव दैट फीलिंग ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट। इसीलिए आपने देखा होगा कि पीपल want to work in a very exciting project, right? Something which gives them the meaning, something which
which wake them up in the morning, fill their body with energy, and they go to the work, right? With a fresh mind, with a fresh perspective, and try to do that work. Okay. और ये इसलिए ये भी एक ह्यूमन की बहुत नीड है. दे शुड बी लुकिंग देमसेल्फ एज बीइंग अ प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग, नॉट एज समथिंग हु हैज टू डू द रूटीन रोट जॉब which can be done by a machine, or say should be done by an animal, for example, right? इसलिए now coming to the next and the higher point, which is the fulfillment need, which is self actualization. It only means that अब आपकी अगर ये चारों नीड्स अगर आपकी सेटिस्फाइड हो जाए, even then a time would come, maybe after 5 years, 10 years, 15 years, जहाँ पे आप बोलोगे कि यार ये सब तो ठीक है, but what next? What can I give back to the society? How can I help other people grow? How can I be of help to other people? Not only to me or to my family, but also to be of help to the other people of my even my circle or my society or my friends. How can I put my potential to help? And that is why the people who write blogs, people who write books, people who write give the inspirational videos, even for example, like I am talking to you, I am giving you this video. Why am I doing this? It is because I want to give back something to all the kids like you, something which I have understood, right? And I'm in a position I can invest some time and give this back to you as a gift. And that is known as the self actualization. Now, the reason why I have explained you the Maslow's hierarchy is because what our Vedas have said thousands of years back sits very perfectly with this definition of hierarchy of human needs. Let's see how. Now, if you look at this, our Veda talks about the four fundamental goals of the human life. They are the artha, the kama, the dharma, and the moksha. So the moksha even sits on top of the self-actualization. So there is something which Maslow has probably not gone into the details of it, or probably he does not have the I would say the spiritual insight to go into that, which is known as the moksha. Okay, we'll come into this. Let's first talk about what these basic four things mean. Sorry, artha, kam, dharma, and moksha. So artha, in very easy words, it means all your material possessions, your money, all your houses, the material which you have collected in your lifetime, your self possessions, your dignity, all those things which we see as belongings, the material belongings, those are known as artha. So वेद ये कहते हैं that every human being should strive to procure the resources which they think they should make their life and their family's life comfortable. तो हमारे हिंदू धर्म में और हिंदू समाज में वेल्थ को क्रिएट करना और वेल्थ को एक्यूमुलेट करना को गंदी निगाहों से नहीं देखा गया है. इट डजंट मीन कि हर आदमी अपना सारा दुनियादारी छोड़कर पहाड़ में जाकर केवल तपस्या करे. नहीं, ऐसा नहीं है. वो कुछ लोगों के लिए सही हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी आई मीन 99% लोगों के लिए, जो लोग गृहस्थ हैं और जो लोग ना भी गृहस्थ हैं लेकिन जो लोग इस सोसाइटी में रह के अपना पालन पोषण कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं अर्था से जूझना ही पड़ेगा. वो जहाँ भी काम कर रहे हैं, जैसे भी काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना क्या मटेरियल पोजीशन अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए इकट्ठा किया है, ये उसके बारे में बात करते हैं. लेकिन यहाँ दो चीज़ों का ध्यान रखने वाला है. वो दो चीज़ों ये ध्यान रखने वाले हैं कि आपने जितनी भी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एक्यूमुलेट की हैं, अपनी लाइफ में एक्यूमुलेट की हैं, उससे आपको संतुष्ट हैं या नहीं. अगर आपकी ज़िंदगी एक दौड़ते हुए रोबोट की तरह बन गई है और आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं उससे, जिससे कि आपने इकट्ठा किया है अपनी लाइफ में, तब सब कुछ बेकार है. पहली बात. दूसरी बात, आपने जो इकट्ठा किया है, जो भी धन संपत्ति, बच्चे, परिवार के लिए, अपने लिए जो इकट्ठा किया है, वो उसके जो मीन्स हैं, उसके जो इकट्ठा करने के तरीके हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए, वो धर्म के अनुसार होने चाहिए. इसलिए हम लोग थर्ड पॉइंट धर्म आप देखेंगे.
वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, किसी को बिना चोट पहुंचाए आने चाहिए, किसी को बिना रुलाए आना चाहिए, कोई भी गलत काम किए बिना उन सबको एक्यूमुलेट अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। काम का मतलब ये होता है कि आपके सारे जो फिजिकल सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आपके जो पांचों इंद्रियां हैं, उन सब से आपको जो खुशी या जो सुखी मिलता है उन सबको एक्यूमुलेट करना। एक लाइफ विच इज फिल्ड विथ लव, केयरिंग, फ्रेंडशिप, pursuit of joyous and pleasurable life, a life which doesn't even have all the work. It should have element of music, painting, intimacy, आर्ट, सिंगिंग, ब्यूटी, अफेक्शंस, काइंडनेस। ये सारी चीज़ें एक ह्यूमन लाइफ को ह्यूमन बनाती हैं। अगर ह्यूमन अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ काम ही करते रहेंगे तो पैसे तो बहुत इकट्ठा कर लेंगे, घर पे घर, कोठियों पे कोठियाँ बनाते चले जाएंगे, लेकिन उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब शून्य होगा। वो इंसान अंदर से शून्य हो जाएगा। इसलिए अर्थ के साथ उस अर्थ का कुछ काम भी होना चाहिए, उस अर्थ को काम में आए, उस इंसान के काम आए। उसके लिए उसकी लाइफ में इमोशनल एस्पेक्ट्स भी होने चाहिए, उस लाइफ में प्लेजर्स भी होने चाहिए। उसको अगर वो उसका क्रिएटर है तो वो उसका भोक्ता भी बनना चाहिए, वो उसको भोग भी सके ऐसा भी बनना चाहिए। लेकिन इसमें भी वेद बोलते हैं कि इसमें भी आपको अपना धर्म नहीं भूलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप परस्यूट ऑफ प्लेजर में, परस्यूट ऑफ जॉयस लाइफ में इतने घुस जाए कि आपकी जो पूरी जिंदगी है वो एक काल कोठरी के अंदर चली जाए। मतलब आपको जिंदगी में अगर सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि मुझे अपनी जिंदगी को प्लेजरेबल बनाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं हुआ। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को मान लीजिए किसी को ड्रिंक करने में अगर मजा आ रहा है, या किसी को केवल ताश खेलने में मजा आ रहा है, और वो एक नशेड़ी बन जाए, या वो एक ताश खेलने वाला वो जुआरी बन जाए, तो वो काम का तो मजा ले रहा है क्योंकि वो अपने आप को प्लेजर तो दे रहा है, लेकिन प्लेजर देने की से एडिक्टेड हो गया है। तो अ पर्सन शुड नॉट बी एडिक्टेड टू द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ एज वेल एज कामा। Now, next, dharma. Now, dharma is like a balance, which balances the artha and the kama. Means इंसान भोगने वाला जो इंसान हो जो कमा रहा है, जो बना रहा है, जो बाजार, उसको इन दोनों चीजों को लिमिट में भोगना चाहिए। भोगना चाहिए तो बोलता है वेद, लेकिन लिमिट में भोगना चाहिए ये भी बोलता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी ने बोला था कि इस दुनिया में सारे इंसानों के लिए सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन एक इंसान के ग्रीड के लिए पूरा विश्व के रिसोर्सेज भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ग्रीड जो होता है वो उसका कोई थल, उसका कोई बेस नहीं होता है, वो अनंत गहरा काला कोठरी की तरह होता है। आप डालते जाइए लेकिन इंसान का ग्रीड खत्म नहीं होगा, राइट। तो धर्मा ये बोलता है कि आपके अंदर वो ग्रीड, एंगर और क्रुएलिटी ये सब खत्म होने चाहिए, या आपको उसे बैलेंस करना पड़ेगा। आपको राइट, वर्चुअस और एथिकल वे ऑफ लाइफ को लीड करना होगा, which means to say that the decisions which you take, the way you make your money, and the way even you go and seek pleasure in your married life or outside your married life, you should always do that in a very balanced way. It should not go out of control. Anything which goes out of control in nature in general is going to be always be harmful. और धर्म ये भी कहता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अगर कोई if you see anybody whom you should be helping, you should go ahead and help that person. अगर आप जानते हो कि एक बंदा है जो असहाय है, जिसको मदद की जरूरत, और आपने उसकी उस समय मदद नहीं की जब आपकी क्षमता थी मदद करने की, तो ये बिल्कुल ही अधर्म वाली बात हो जाती है, क्योंकि धर्म वहां पे आपका एक इंसान होने का धर्म आपसे छूटता है वहां पे। अब हम बात करते हैं मोक्षा की। तो मोक्षा में हमारे ये बोलते हैं, वेद में ये बताते हैं कि मोक्ष, ये जो धर्म का अर्थ, काम और धर्म, तो ये इंसान ये एक कह लीजिए 99% लोगों के लिए है। इस पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो लोग यहीं फंसे हुए हैं। अर्थ काम में आप बोल लीजिए कि 90 लोग फंसे हैं, जिनको सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरा बच्चा दिखता है, जिनको सिर्फ अपने घर दिखते हैं, अपनी गाड़ियां दिखती हैं, अपने बैंक बैलेंस दिखते हैं,
और या वो लोग जो लोग अपने भी प्लेजर में डूबे रहते हैं, वो नार्सिस्टिक लोग हो जाते हैं जिनको अपने प्लेजर के आगे किसी और का कुछ नहीं दिखता है। वो सिर्फ ये सोच सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें, हम अपना ईगो कैसे लोगों के सामने दिखाएं, हम ये कैसे दिखाएं कि हम कितने बड़े बन चुके हैं, राइट। तो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, आज आप अपने अगल बगल भी देखेंगे तो आपको ऐसा ही दिखेगा कि इन्हीं दोनों में फंसे हुए हैं। धर्म की लोग बात तो करते हैं क्योंकि बात तो करने में अच्छा लगता है, लेकिन कितने लोग सचमुच आगे बढ़ के धर्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और उसको अपनी जिंदगी में उतारते हैं? मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 8% पीपल। सो 90 यहाँ पे हो गए, 8% धर्मा में हो गए, मे बी 2% पीपल who have risen beyond all these three. They see all of it as Maya, and they say that there has to be something else beyond the earth, kama, and dharma. The people who strive to go beyond all these three realms of life, they can then go for moksha. तो मोक्षा का मतलब वो लोग जो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए अग्रसर होते हैं, दे वांट अ रिलीज फ्रॉम द लाइफ इल्यूजन, द इग्नोरेंस एंड द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. ओके. May your life be simple and pure so that you know only beauty. May your mind be clear and quiet so you speak only of truth. May your heart be filled with love and compassion so you radiate light to all you meet. May all you do be blessed and with divine grace. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर कोई चिल्ला भी रहा है तो आप उसको पलट के ना चिल्लाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको उस तरह से रिएक्ट नहीं करना है जैसे कि आपको उकसाया गया है रिएक्ट करने के लिए. वी आर ऑल मशीन्स हु आर बीइंग फेड टू रिएक्ट इन अ सर्टेन वे, एंड देन यू कैन और आपके ऊपर कोई अगर इल्जाम लगा रहा है तो भी आप क्वाइट रहे हैं. आई मीन, आई एम जस्ट गिविंग मे बी अ वेरी बेसिक एग्जांपल्स, बट मोक्ष मीन्स जहाँ पे आप इन सारी दुनियादारी संसार की चीजों से, माया की चीजों से ऊपर आप आ गए हो. ओके. Okay, so I hope that this is clear to everyone. So Artha, Kama, Dharma and Moksha, they became the four main pillars of the Hinduism way of life and Hinduism goal of the life. Okay, okay, let's move forward. Okay, तो आज हम लोगों की एक स्टोरी है, समुद्र मंथन की स्टोरी है, और मैं यहाँ पे ऑब्वियसली मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ेगी. आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग यू दैट व्हाट इज इट गोइंग ऑन ओवर हियर. ओके. समुद्र मंथन, कुर्मा अवतार, नीलकंठ एंड मोहिनी अवतार. तो बेटा, जैसे पिछली बार आपने देखा था कि हम लोग ने लॉर्ड विष्णु के 5th अवतार की बात की थी, वामन अवतार की बात की थी. इस स्टोरी में आप देखोगे हम विष्णु भगवान के 2nd अवतार की बात करेंगे, जो कुर्मा अवतार. तो कुर्मा लिटरली मीन्स टू tortoise. When Lord Vishnu has reincarnated as the tortoise, and he gave the support to this complete Mandranchal Parvat to do the Samudra Manthan. Okay, I will talk about it. Brothers who always hated each other. The Asura always wanted to rule heaven. Once, sage Durvasa presented a garland of flowers to Lord Indra, who put it on his elephant. The elephant shrugged the garland and it fell on the ground. Sage Durvasa felt insulted and cursed Lord Indra that he, along with all the other devas, will lose their strength. Because of this curse, the strength of the Asuras had grown much higher than of the Devtas. The Devtas got scared of this and came to Lord Brahma to ask for help. He suggested that only Lord Vishnu can get them out of their misery. As they approached Lord... Okay, तो बेटा यहाँ तक कि मैं आपको स्टोरी समराइज कर देता हूँ. तो देवता आर द पीपल हु एम्बॉडी, लाइक जो लोग हर वो उसके लिए जाने जाते हैं, हर राइट थिंग्स के लिए जाने जाते हैं. द वे दे लिव देयर लाइफ, द धर्मा दैट दे फॉलो आर कॉल्ड द देवतास, एंड द पीपल हु डू नॉट फॉलो द धर्मा
and they only rely on their muscle power. They are termed as, or can be considered as, asuras, or the people who do not have, or they represent all the bad things in life. Okay, so in these two things, what has happened is, there was a fight between the devtas and the asuras, like as you have seen earlier, right? And इसमें दुर्वासा जो मुनि की बात की गई है, ये दुर्वासा मुनि जो है बहुत ही रिस्पेक्टेड एंड सीक्रेट ऑफ आवर गुरुज हुए एंशिएंट इंडिया में. द थिंग इज दैट उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था. लाइक वन ऑफ हिज कैरेक्टरिस्टिक्स वाज दैट. और दुर्वासा मुनि जो भी श्राप देते थे, कर्स देते थे, वो फिर उसका कोई तोड़ नहीं होता था. लाइक देयर आर वर्क अराउंड, लेकिन वो जल्दी उनका, तो उन्होंने इंद्र भगवान को, इंद्र जो देवता के किंग थे, उनको ये श्राप दिया कि उनकी जो सारी शक्ति है वो क्षीण हो जाएगी. और वो लोग घबराए, क्योंकि फिर क्या होता कि जैसे जैसे उनकी शक्ति क्षीण होती, जो बैड पीपल हैं, जो असुर हैं, दानव हैं, वो लोग उन पर हावी हो जाते, राइट. तो वो लोग फिर आए हैं भगवान विष्णु के पास कि आप हमको कोई सॉल्यूशन बताएं. Lord Vishnu, he advised them that if they want to defeat the Asura, they must attain Amrit. The only way they could get the Amrit was by churning the ocean of milk using Mount Meru. ओके, तो विष्णु भगवान ने बोला कि अगर एक ही तरीका है कि कैसे आप सारे जितने देवता लोग हैं, देवतागण हैं, वो लोग असुर से ज़्यादा पावरफुल हो जाए, उसके लिए उनको एक अमृत का सेवन करना पड़ेगा. और वो जो अमृत है, जो नेक्टर है, वो अमृत कैसे निकलेगा? वो ओशन से निकलेगा. ओशन को चर्ण करना पड़ेगा. चर्ण करने का मतलब बेटा आप जैसे समझ लो कि योगर्ट से जब लस्सी बनाते हैं तो उसको चर्ण करना पड़ता है, उसको फेंकना पड़ता है सॉर्ट ऑफ. तो ऐसे ही समुद्र को चर्ण करना पड़ेगा, और उससे जो जो चीज़ें निकलेंगी उनमें से अमृत भी निकलेगा, अभी हम देखेंगे. और वो अमृत को जो पी लेगा वो अमर हो जाएगा और वो पावरफुल हो जाएगा. और जो देवता उसको पी लेंगे वो फोकस्ड रहेंगे जो उसके लिए, उस अमृत के लिए, तो वो फिर उनसे, असुर से वो जीत सकते हैं. ओके. Once they consume the Amrit which comes out from the ocean, they will become immortal, much more powerful than the Asura. Lord Vishnu explained that they would not be able to churn the ocean by themselves. They must make peace with the Asura and use their help. He told them they must not let their desire come in the way, even if the Asura take away the valuable things which come out from the ocean. Lord Vishnu assured them that only the Devtas will get the Amrit, which they must focus to get than anything else. Indra, the king of heaven, went to Bali, the king of the Asura. Indra told Bali there is an Amrit in the ocean and that they must unite to churn the ocean so both of their people can divide it among themselves. Bali, along with all the other Asuras, decided to keep their conflicts aside and unite for the task of churning the ocean. ओके बेटा, तो आपने देखा कि इंद्र जो थे, देवताओं के जो राजा थे, वो बलि के पास गए, जो कि दैत्यों के राजा थे, असुर के राजा थे, किंग थे. और इन्होंने प्रपोजल रखा कि हम और आप, हम दोनों मिलके चलिए ओशन को चर्ण करते हैं, क्योंकि उससे जो अमृत निकलेगा वो हम दोनों आपस में बांट लेंगे, और हम लोगों को ये करना चाहिए. तो राजा बलि को ये बात पसंद आई, और उन्होंने मनी मन ये सोचा कि हाँ चलो ये देवताओं के साथ मिल के करते हैं. और जैसे ही वो अमृत निकलेगा, उन्होंने अपने मन में सोचा कि जैसे ही ये अमृत निकलेगा उसको पूरा दैत्य लोग या असुर लोग इसको कब्जा कर लेंगे, हम लोग पूरा पिएंगे, ताकि हम लोग हमेशा हमेशा के लिए इमोर्टल हो जाए, मतलब जिसको कोई भी कभी भी ना मार पाए, राइट, अमर हो जाए. The Dev and the Asura set off together to bring the mountain.
Even with all their strength put together, they could not bring it all the way to the ocean. They prayed to Lord Vishnu, who came on Garuda and helped them to bring Mount Mandrachal to the ocean. Vasuki, the king of serpents, also came on the instruction of Lord Vishnu, who then was used as a rope around Mount Mandrachal to turn the ocean. राइट तो यहाँ पे बेटा जैसे कि आपने देखा विष्णु भगवान गरुड़ से उनका गरुड़ जो है वो उनका ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो गरुड़ उनको गरुड़ महाराज भी बोलते हैं। वो गरुड़ महाराज से आए और मंदराचल पर्वत को उठाकर ओशन में लाए, क्योंकि मंदराचल पर्वत एक्चुअली आज भी अगर आप देखेंगे तो मंदराचल पर्वत आज भी बिहार में फिजिकली आप जाके दर्शन भी कर सकते हैं। लोग जाते हैं मंदराचल पर्वत देखने के लिए, क्योंकि पौराणिक कहानियों में जैसे कि ये कहानी आप देख रहे हैं, इसमें वही मंदराचल पर्वत को ओशन में लाया गया था और उसे चर्ण किया गया था। एक चीज जो मैं आपसे अभी बोलना चाहूंगा, आप इसको सुन लीजिएगा एक कहानी के रूप में। आप लोग ज्यादा परेशान मत होना कि जैसे कि बच्चे लोग कभी कभी सोचते हैं कि ये हुआ था नहीं हुआ था, इसका किसी को पास भी इसका जवाब नहीं है, लेकिन ये एक कहानी है। हम इससे क्या लेसन ले सकते हैं, ये इस पर हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन होना चाहिए, ना कि ये हुआ था तो कैसे हुआ था और ये कैसे पॉसिबल है और कैसे नहीं पॉसिबल है। ओके, अब इसमें आप दूसरा देखिए, ये जो वासुकी महाराज है, वासुकी ये जो बड़े से नाग देवता आपको दिख रहे हैं, ये वही वासुकी महाराज है जो शिव जी अपने गर्दन में पहनते हैं, अपने गले में। जो नाग देवता जिनके रहते हैं उन्हीं का नाम वासुकी है। वो उन्हीं के शिव भगवान के इंस्ट्रक्शंस पे वो यहाँ पर आए थे। इसी को यूज करते हुए, वासुकी को यूज करते हुए ये ओशन का चर्निंग हो रहा था। Vasuki wrapped tightly around the mountain for the work to start. Indra knew the snake will let out poison, so he played a trick. He told Bali that the Devtas want to be on the side of the serpent's head and the Asuras should hold the tail. King Bali thought to himself that why should they be at the end of the serpent? It must be a conspiracy. He insisted the Devtas to stay at the tail side. With full dedication, they all started churning the ocean together. But soon the heavy Mount Mandrachal started sinking in the ocean as it had no support. Putting in all their energy, they could not make the mountain come back up. With the devotion, they all prayed to Lord Vishnu together for help. Lord Vishnu himself incarnated as a Kurma and relieved their despair by bringing the mountain up at the top of the ocean on his back. He promised to stay there supporting the mountain until the Amrit reaches the right hand. ओके बेटा, तो भी आपने देखा कि क्या हुआ था कि जब वो लोगों ने चर्निंग स्टार्ट किया था ओशन में, तो जो माउंट मंदराचल था, क्योंकि वो ओशन बेड पे रखा हुआ था और इतनी तेज से चर्निंग हो रही थी, इधर देवता और इधर असुर, वो जो माउंटेन मंदराचल था वो जमीन में धंसने लगा, वो समुद्र बेड के नीचे जाने लगा, और उनके बहुत ही कोशिश के बाद भी वो उसको ऊपर नहीं ला पाए। तब भगवान विष्णु ने अपना नेक्स्ट इनकारनेशन लेकर, एक टॉर्टवाइज का इनकारनेशन लेके, कुर्मा अवतार लेकर उसको सपोर्ट किया। तो वो उन्होंने अपने पीछे, जैसे भी आपने फोटो में देखा था, उनके ही पीठ पर रखकर, ये माउंटेन जो मंदराचल पर्वत है ये उनके पीठ पे रखा गया। वो एक कुर्मा बन गए, एक टॉर्टवाइज बन गए, उनके ऊपर ये पहाड़ रखा गया और तब उसकी चर्निंग स्टार्ट हुई। ओके, और जब सारे देवता लोग आगे बढ़े।
By the grace of Lord Vishnu, their energies revived and they could churn the ocean easily. Vasuki also felt no pain. But the Asura started becoming weaker from the poison coming from Vasuki's mouth. This made them churn the ocean even faster. The first to emerge was all the impurities from the ocean in the form of a deadly poison called halal. The atmosphere became toxic and everyone started choking with its poisonous fumes. The Devtas prayed to Lord Shiv, who then appeared to rescue the world. Lord Shiv collected all the poison and swallowed it himself. He kept the poison in his throat, which was so deadly that it gave Lord Shiva a blue throat. This is where he got to be known as Neelkant. ओके बेटा, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे जो पहली चीज जो निकली थी समुद्र मंथन से, वो विश्व का सबसे ज्यादा खतरनाक एक जहर था, हलाहल जिसको बोलते हैं, और वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग जहर था कि वो पूरे विश्व को, पूरी धरती को वो जला के राख कर देता। तो उस समय सब लोगों ने प्रार्थना की भगवान शिव से, और शिव भगवान ने उसको अपने गले, वो पूरा हलाहल खुद पी लिया, वो पूरा जहर का जो निकला था उसको खुद ही पी लिया। इसलिए आप लोग देखेंगे कि शिव भगवान का जो गला है वो ब्लू कलर का होता है, राइट। इसीलिए उनको बोला गया नीलकंठ। नील मतलब ब्लू और कंठ मीन्स गला, राइट। द ब्लू नेक, राइट, नीलकंठ। और भगवान शिव ने उसको और नीचे नहीं लिया, क्योंकि वो इतना ज्यादा ठोस जहर था हलाहल कि इसलिए उसको उन्होंने अपने गले में रोका, ना ही उसको नीचे लिया और ना ही उसको बाहर रहने दिया। तो वो हमेशा के लिए वो भगवान शिव के गले में जाके रुक गया। ओके, अब आप आगे चलते हैं। Once all the poison had been removed, the Devtas and the Asuras returned to churning the ocean. Just then, Gandhana, the divine cow, appeared, which was later taken by Lord Brahma, followed by Achashravas, which was given to Bali. Then came Airavat, which was taken by Lord Indra, followed by Kaustubha, which was later worn by Lord Vishnu, Parijat, which was taken to heaven, and the Apsaras of heaven. Then with glory came Lakshmi, the goddess of wealth and fortune. She came with the Vaijanti Mala in her hands for Lord Vishnu and accepted him for her eternal companion, who was followed by Lakshmi, the goddess of misfortune, followed by Varuni, the goddess of wine, who was taken by the Asuras. Many other valuables were produced, including Sharanga, Lord Vishnu's Shankh, Panchjanya, Kalpavriks, Chintamani, Chandradev, which enhanced Lord Shiv's head, Nindra Devi, the powerful earrings which can protect for danger, which was taken by Lord Indra for Mother Aditi, Lord Varun's umbrella. Then at last came Dhanvantri, the god of Ayurveda and medicine, who came with a golden pot filled with Amrit. Seeing this, the Asura ran towards Dhanvantri and tried to snatch the divine pot of nectar from him. They started fighting among themselves on who would take the Amrit first.
The Devtas watched this and prayed to Lord Vishnu to help them before the Asura consume the Amrit and it becomes too late. Lord Vishnu assured the Devtas that he will get back the Amrit for them. ओके बेटा, तो आप लोगों ने देखा कि वो समुद्र मंथन से कैसी कैसी चीज़ें बाहर आईं और किस किस ने उसको ग्रहण किया। जो लास्ट में आए वो धन्वंतरी देवता आए और उनके हाथों में जो अमृत का प्याला था, वो पॉट था अमृत का, और उसके पीछे सारे देवता और असुर लोग भागे। और एक्चुअली असुरों ने उसको अपने हाथ में ले भी लिया, तो उनसे छीन लिया था, अपने हाथों में ले लिया था, और सब लोग भागे जा रहे थे क्योंकि हर आदमी चाहता था कि वो पी ले उसको। तभी देवताओं ने विष्णु भगवान से फिर ये बोला कि आप हमारी मदद करें, नहीं तो इस हिसाब से तो असुर लोग ही सारा अमृत पी जाएंगे और हमेशा के लिए वो अमर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि भगवान विष्णु ने उनकी कैसे हेल्प की। ओके, Lord Vishnu took the form of the most beautiful Apsara, Mohini, and appeared in front of the Asura. The Asura were hypnotized by Mohini's charm and soon forgot about their quarrel. Mohini took the pot of Amrit from their hands and said, I will distribute the Amrit both to the Asura and the Devta one by one. The Asura said, We can do anything you ask and are happy to receive the Amrit from your hands. She commanded, You must all sit down forming two rows, one of the Devtas and one of the Asuras. When they all settled down, Mohini served the Amrit first to the Devtas. She then cleverly changed the pot in her hand so that the Asura did not get any Amrit. Mohini kept all the Asura under her spell as she gave the Amrit to the Devtas. But one of the Asuras was suspicious about the whole event. Very quietly, he sneaked at the end of the row of the Devtas as Mohini poured the Amrit in his mouth. Suryadev and Chandradev recognized the Asura and informed Mohini of his disguise. Lord Vishnu took back his normal form and with his Sudarshan Chakra beheaded the Asura. As the Asura already drank the Amrit, he could not be killed, but was split in two parts. The head became Rahu and the body became Ketu. To take revenge, Rahu promised that he will eclipse the sun and the moon from time to time. The Devtas were very happy that sage Durvasa's curse was lifted. And okay. So that completes our story for the Samudra Manthan, and now we can go ahead. I will show you some of the pictures of the places. Okay, so the top left one, which you see, this is the largest congregation of the humans in the world for one place, for one objective, and this is the Kumbh Mela. So कुंभ मेला जो लगता है इंडिया के डिफरेंट सिटीज़ में फॉर इन द ऑस्पिशियस टाइम बेस्ड ऑन कि वो कौन सी सिटी होगी, उज्जैन होगा, प्रयागराज हो, या हमारी दूसरी जो सिटीज़ पे जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, उज्जैन या प्रयागराज। और कुंभ मेला में एक साथ मतलब टोटल कुंभ मेला में ऑलमोस्ट 5 से 10 करोड़ लोग गंगा स्नान करते हैं। द बिलीफ गोज
that once they take the holy dip, all their sins will be purified. Okay, and there's a lot number of people who come for the Kumbh Mela and take the holy dip. The second photo which you see is about the Ganesha. Like ये बेटा गणेश चतुर्थी की फोटो है। गणेश चतुर्थी में स्पेशली ये हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है। वैसे तो पूरे इंडिया में मनाया जाता है गणेश चतुर्थी। इसमें गणेश जी की जो मूर्ति है वो स्थापित करते हैं घरों में, बाहर भी। और बाद में जब गणेश चतुर्थी में जब पूजा कंप्लीट हो जाती है तो गणेश जी की जो मूर्ति है उसका विसर्जन करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए लोग इन भगवान गणेश जी की मूर्ति ले जा रहे हैं और इसको समुद्र में इसका विसर्जन कर देंगे। ठीक है। जो थर्ड फोटो जो आप देख रहे हो ये रावण की और मेघनाथ की फोटो है। और व्हाट इज बीइंग सेलिब्रेटेड इज दशहरा। जैसे कि इंडिया में दशहरा हम लोग बनाते हैं और हम लोग रावण को, मेघनाथ की जो ये आइडल्स हैं, जो ह्यूज आइडल्स हैं, जो पुतला फूकते हैं, इसको फायर से हम लोग आग लगा के इनको ख़त्म करते हैं। इट्स अ सिंबॉलिक इवेंट विच सेज दैट हमारे अंदर भी जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी जल जाए और जितनी भी अच्छाइयां हैं उनको पनपने का और अवसर और जगह मिले। ओके, तो इस तरह से हम विजयदशमी में हम रावण और मेघनाथ का दहन करते हैं और दिवाली की शुभ शुरुआत होती है। ओके बेटा, so with that we end our session today, and I hope that you find this session informative, and going forward obviously we'll keep it more interactive. We'll do our next session on 16th of January, same time, same link. So we'll see you then the next time. Okay, bye. Have a great day. Namaste.